बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट हैं उनमें फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी रेडियन अकाउंट फॉर सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। हाउ मैनी स्टेयर रेडियन अकाउंट फॉर circumference of a sphere. Define first law of thermodynamics. Write down its application. Question number 3 है what is Carnot heat engine and Carnot cycle. Question number 4 है what is polarization of light. Discuss polarization by reflection. Question number 5 है why is the acceleration of a body moving uniformly in a circle directed toward the center. Explain the warning, never use the large wrench to tighten a small bolt. Differentiate between precision and accuracy. Define resonance and practical example of resonance. Define and explain Newton's second law in terms of angular momentum. Define torque with example. Define impulse and how it is related to linear momentum. State and explain Bragg's law. Define moment of inertia. On what factor does it depends? Define projectile motion and show that maximum range covered by a projectile is given by or maximum is equal to vi square divided by g. Define elastic collision. Derive mathematical equation for calculating the final velocity of elasticity colliding body in one dimension. Differentiate between free oscillation and force oscillation. What are the effects of various factors on speed of sound in air? Explain briefly vector product of two vectors. What are uses of ultrasonic? Differentiate between elastic and inelastic collision. Find the dimension of Planck's constant h. Explain the diffraction of X-rays by Young double slits experiment. Define terminal velocity and prove that Vt is directly proportional to r square. Define and briefly explain interference of sound wave. Define error and its type. State and explain law of conservation of momentum. Show that E is equal to mc square is dimensionally correct. Define centripetal acceleration. Show that AC is equal to minus omega square r. Define linear and angular momentum. State Huygens principle. What is difference between spherical and plane wave? What is difference between spherical and plane wave fronts? How you can explain Brewster's law of polarization? सेक्शन सी के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनमें क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट. व्हाट इज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी. प्रूव दैट absolute potential energy is equal to Gm me divided by Re. What is heat engine? Derive relation for efficiency of heat engine. Find relation for terminal velocity of a spherical object in a resistive fluid. Describe the construction and working Michelson interferometer. State equation of continuity and show that V is inversely related to 1 over A. What is diffraction grating? How can the wavelength of a beam of a light can be measured with it? Show that rate of change of angular momentum is equal to torque. Explain Newton formula of speed of sound. Show that how it was corrected by French scientist Laplace. What does rectangular component mean? Explain addition of vector by rectangular component.
Explain the interference effect produced by thin film. Explain law of thermodynamics and its application. What is Bernoulli equation? Explain their application. Differentiate between air and light air. Define elastic and inelastic collision. Give example in each case. इसके अलावा जो न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट हैं उनके साथ मैंने बुक का पेज नंबर भी लिख दिया है, तो आप इनको भी लाजमी देखें. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो 2.3 एग्ज़ाम्पल है पेज नंबर 51 पर, न्यूमेरिकल नंबर 56 पेज नंबर 72, न्यूमेरिकल नंबर 12 पेज नंबर 114, एग्ज़ाम्पल 4.4 पेज नंबर 131, न्यूमेरिकल नंबर 1 and 2 पेज नंबर 147, न्यूमेरिकल नंबर 7 पेज नंबर 190. तो ये तो थे सेक्शन सी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. सेक्शन सी में एक क्वेश्चन डेफिनेशन का होगा और जिसमें आप नोड, वेवलेंथ, अल्ट्रासोनिक, डॉपलर इफेक्ट, एस्केप वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोलर हीट कैपेसिटी CP and CV, artificial gravity, define simple harmonic motion, time period, free oscillation, resonance, phase, orbital velocity और स्टोक्स लॉ. इसके अलावा डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. कुछ तो हमने सेक्शन बी में भी ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन आप इनको शॉर्ट डेफिनेशंस में भी लाजमी नोट कर लें और अच्छी तरह तैयार कर लें. तो स्टूडेंट ये तो था फ़िज़िक्स का गेस्ट पेपर और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. उम्मीद है आपका पेपर बहुत अच्छा होगा. मज़ीद इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए. शुक्रिया.